All right, we are starting from this. We are starting from this particular point, that what are the procedures? You see, there are certain ways a particular task is to be done. What are those different steps? Those are all included in procedures. और जैसा मैंने पहले को कहा था और अंजलि जी ने भी मेरे को सेकंड किया था, there should be a rule book in almost all the schools. What are the things that are expected of a nice citizen or as a nice student in the class, in the school premises, in the school bus, in the playground? But then the question is why there should be procedures. You see, sometimes back nearly 3-4 years back, there were a number of things that mishappened rather. There was one school in Greater Noida, a school child of class 8 standard, I believe so. He drowned while he was swimming. And there was inquiry also from CBSE, from local police, from IB and all that. And everybody came to the conclusion that there were no rules and regulations. There were no security guard. There was lot of slip in the swimming pool, and that's why there were these casualties. Now, why procedures are required? Just to maintain order. Say, for example, in the last period, when the things are coming to the end, that is, the day is coming to an end, as soon as the bell rings, we see generally the students are rushing out of the door, into the corridor, then on the stairs, and in this, yes, sir. And in this procedure, in this whole process of coming down to their main gate to leave the school premises, there was no order. And that is why there can be pushes, there can be pulls, there can be dhakka, mukki, everything will be there, so that there will be total chaos in the premises. And nobody knows what exactly is happening, who is going where. So then how to set the right procedures? You see, first the thing is, कि what should be done. अंजलि जी ने पिछली बार एक प्रॉब्लम हमारे पास इकट्ठी करके दी थी कि the students in their school, they are very much energetic. अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले ही मैं डॉक्टर चंद्रकांत नायक जी से बात कर रहा था. So we all are of the same view that these people, these students, they cannot be controlled like just only by sermonizing them, just giving them the sermon. They will not be understanding. So what exactly is to be done? How to set right procedure is practice, practice, practice. And then you see, at one go, there will be no adoption of these procedures. They will understand to some extent, but not all. So certainly, first we start, set the procedure, bring them to the practice, and then ask the students to repeat them. Then certainly there will be drawbacks, there will be shortcomings. We praise them. Yes, up to this extent, it was very perfectly that you have done this. Now let us again start practicing so that we come down next again to a new procedure or making up to those shortcomings. So that is how we have to set the procedures. And generally, what I used to do is that if the rule book was given to them, 5 procedures per week. The first day, first procedure, then second day, 2 actions, 2 tasks were to be accomplished. First day task and second day task. Then third day, they will be repeating first task, second task, third task. So by the end of this week, they will be repeating the first task 5 times, second task 4 times, and so on, so that they will be becoming a little bit near perfection. But then the question comes, what are the procedures? Why the procedures? How to set procedures? Then what are the examples of these procedures? Let us see on the next slide. It is given over here. You see, for example, entering the room. How should they enter the room? Enter quietly, politely, don't run, don't interrupt others, go to your seat. In between, you can add a little bit new things. Don't touch
the person who is walking in your front on the back, he may take it as a push. Then second thing, don't push. Then while you are walking, don't drag your feet on the floor, so that there should be no noise, no sound coming out of when you are walking up. These are certain things which need procedures, we need practice. Similarly, the second thing is lining up. Stand up quietly, push in your chair, then take all necessary items that belong to you. Line up without touching or talking, then face the front of the line and watch where they are going, where the line is moving. No murmuring, no talking, no instructions. थोड़ा जल्दी कर, भाई तेज चल रहे, थोड़ा सीधा चल ले. These type of things, these type of responses keep on coming to your ears, and then certainly you will be disturbed. When we say a procedure is to be practiced, you must take a note of one particular thing, that it should not be with any type of talks going on in the class. Similarly, leaving the room. First, you tell the teachers, where are you going? Then take the class pass. If it should be there rather. Almost all the schools have got this type of system, that they have got the class pass. Then don't run or play in the corridor. Don't push. Don't drag. Sometimes in most of the schools, the railings of the staircases of steel, smooth. So they will sit on the top and slip down. So that is also to be avoided. Similarly, beginning the day, I will give you all these things because we will not be wasting time. Rather, I will give you 3 minutes, each and everybody. Just try to find out what are the different tasks that are to be done in the school premises during whole day. And then we just make a list, and you will see they will be found out in this particular presentation. Is everybody ready? I believe so. What are the different tasks that are to be done by the students in the supervision of the teacher for, for keeping it all regularized, totally orderly? See, for example, this is ending the day. Clean off your desk, pick up any trash, push in the chair, and wait quietly to be dismissed. Answering the question of a teacher, that is a very major problem in almost all the schools, all the classes, all the subjects. When you ask a simple question, those who are not extrovert, or rather who are introvert, those who don't speak too much in the class, in the corridors, with their friends, with their parents, their teachers, they will not answer. So what should be the procedure for answering the question? Raise your hand. Don't say a word. Sometimes say, madam, ma'am, madam, please, madam, me, madam, me. और जो उसमें थोड़े ज्यादा नोटी होते हैं, वो आपका कोई रेस्पॉन्स होने से पहले ही आंसर दे देते हैं. And that makes a little bit annoying to the teacher, that whole class is to be involved in the learning process, and that is why this type of disturbance should not be there. लेकिन मैंने पहले बताया आपको, these things are to be practiced and practiced and practiced. और दूसरी बात ये भी है कि when you make your own rule book, then they should be followed, all the rules, all the procedures, all the tasks that are to be done, rules also, routines also, everything should be followed by the teachers strictly. It is not like that कि I am a mathematics teacher, so मेरी क्लास में तो 90% बच्चे सोते रहेंगे and I don't bother. No. Similarly, in the class of history or Hindi or social sciences, I have seen too many responses coming up very promptly and very gradually. So these type of disturbances have to be. Now let us say exam papers. आपने unit test लिया है. How to collect that paper? आपने सब कुछ इंश्योर कर लिया कि अच्छे सब बच्चों ने अपना नाम भी लिखा है,
They have mentioned their class, their roll number, subject, everything. But then how to collect it? Collection is a little bit problem. Number of procedures are to be there. That is, मैं जो प्रोसीजर फॉलो करता था और टीचर्स को भी बताया था कि the last person will hand over his answer sheet to the one who is sitting in front of him, just in front of you. Then to the next in front, then to the next in front. So there are 4 rows of students, and all 4 rows have collected their answer sheets to the first benches. Then from right to left or left to right, they keep on transferring, and ultimately within 1 minute, all class papers have been collected with the one particular person, that is one particular child who is sitting right in the front of the class. This type of task can be done only when a number of things are there. Ending the day, having lunch. Lunch ke time mein, I don't know, but most of the schools have got a system of prayer. Wash your hands, join your hands, close your eyes, and please say a few words thanking the Almighty that आज आपने मेरे लिए खाना भेजा है. This way, you will be telling not only the procedure, but also instilling in them a sense of responsibility, a sense of gratitude, to be thankful. Now, asking for permission for any work other than learning. Raise your hand, see what you want when teacher asks. If she says yes, then leave your place quietly. And if she says no, then wait and repeat after some time. So these are different tasks that are generally to be done in the classroom, and that procedure should be followed by each student or each teacher very effectively, strictly, to the point, whatsoever is written exactly in the same matter, so that not a single child will be there in the class who will take advantages of your leniency कि ये मैडम तो थोड़ा सा ढीली है, या ध्यान नहीं देती हैं, या थकी हुई हैं. No matter if I am in the class, then certainly I have to be very much vigilant and careful what exactly is happening in the class. Similarly, other things that will be coming in our mind, जो मेरे पास थोड़े थोड़े से प्रोसीजर्स दिए हैं मैंने, like for example attention. You are doing some task, activity, group task, anything, or just writing 10 lines on a particular subject, and then you want their signals. So there are a number of procedures, like I have written over here, 1 2 3 eyes on me. देखिए, gentlemen and gentle ladies, I tell you one thing. For these procedures, you must have a system of monitors. लेकिन अभी हम लोग जो है, मैंने जो है ये देखा है कि 99% पेरेंट्स आपके स्कूल में एडमिशन करवाएंगे just only for 3 reasons, and they will check these 3 things, taking your promises and finding out from the alumni of your school. Number 1 is safe environment for learning. स्कूल बस में भी, स्कूल प्रीमाइसेस में भी, कॉरिडोर्स में भी, टॉयलेट्स में भी, वॉशरूम में भी, एंड क्लासरूम में भी, लेबोरेटरीज में भी. Everywhere they have to see safety of their child first. Number 2 जो उनकी डिमांड होती है, जो मेरे टाइम में थी, I don't know whether this is still particularly existing over there in the minds of the parents or not, कि सर एक तो just tell or ask my student, my child, or teach him to speak in English. एक तो इसको इंग्लिश बोलना सिखा दीजिए, और नंबर 2 इसको ऑफिसर बना दीजिए किसी भी तरीके से. These poor people, they don't understand कि we are here not for producing clerks, जो कि मैकुले सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने किया था. उन्होंने तो यही अपने डॉक्यूमेंट में लिख दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर हिंदुस्तान को गुलाम बनाना है तो पहले यहाँ के संस्कार और संस्कृति को ध्वस्त करना होगा. वी हैव टू डिमोलिश द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट दे वर. अभी देखिए ना, हम लोग
एक नंबर ऑफ थिंग्स हैव कम अप विद इन दीज 2 years. अब उसमें एक चीज है कि जैसे अंजलि मैडम ने पिछली बार कहा था, देयर इज टू मच ऑफ एनर्जी इन द bodies of the children, and they keep on running around and shouting around and pushing around each other just full throat. तो ये सब तो चलेगा, पर लेकिन क्लासरूम के अंदर नहीं होना चाहिए. सो वी हैव टू हैव मॉनिटर सिस्टम. नहीं हो के हम उनको अगर ऑफिसर्स बना दें तो कैसा रहेगा? दिस इज इन वन ऑफ माय मॉड्यूल्स, दैट इज लीडरशिप डेवलपमेंट इन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. देखिए हम लोग जितने भी मॉनिटर्स बनाते हैं, आई यूज टू गिव देम कि एक 2 इंच का एक कार्डबोर्ड लीजिए. आपने पुलिस वाले और फौजी देखे होंगे, उनके चेस्ट पे लेफ्ट हैंड पे हार्ट के ऊपर एक नेम टैग लगा रहता है, एंड दैट इज ओनली ऑफ 3 इंचेस ब्रॉड, 3 इंचेस लॉन्ग एंड 1.5 इंचेस ब्रॉड. उसके ऊपर उनका नाम लिखा होता है या रैंक लिखा होता है. आप भी ऐसे बना दीजिए. अपनी अपनी क्लास के क्लास टीचर्स को बोल दीजिए कि वी विल बी हैविंग ऑफिसर सिस्टम नाउ. कौन कौन से ऑफिसर? चौक ऑफिसर, बोर्ड ऑफिसर, लाइट्स ऑफिसर, विंडोज एंड डोर्स ऑफिसर, नंबर वाटर ऑफिसर, अटेंशन ऑफिसर, होस्ट ऑफिसर, लाइन ऑफिसर, क्यू ऑफिसर. कितने तरीके के आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एक ऑफिसर बना दीजिए, एंड ही विल बी इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क जो उसको दिया गया है. आपने एक बच्चे को अच्छे से समझाना है, उसके साथ 2 बच्चों की टीम बना देनी है. सो देयर विल बी 3 क्यू ऑफिसर्स, क्लीनलीनेस ऑफिसर्स, ट्रैश ऑफिसर्स, और वो तीनों की तीनों पूरी क्लास को माइंड करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क. क्लास से बच्चे बाहर जा रहे हैं, हैव दिस इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर. और बच्चा बड़ा खुश होके जिस दिन पहले दिन यहाँ पे छाती के ऊपर टैग लेके जाएगा अपने घर में, तो शान से बोलेगा, देखो मम्मी मैं अपनी क्लास का हेल्थ मॉनिटर, तो हेल्थ ऑफिसर. देखो मम्मी, आई एम मॉनिटर, आई एम चीफ ऑफिसर ऑफ माई क्लास. मैं सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ अपनी क्लास का. And parents will also Ajay be. sir, I want to note and add one more thing here. जी. Make the naughtiest student the in charge. Give him some duties so that he can be the change his habits. When we give him the responsibilities of in chargeship, then he may change his routine. I am now in charge of doing some discipline or notebook, and these Yes, duties should be shifted to every child. that is what I was saying कि एक हफ्ते के लिए हाँ. एक मॉनिटर, फिर नेक्स्ट वीक शफल, फिर थर्ड वीक शफल, फिर 4 वीक शफल. तो Yes, एक महीने के अंदर yes, यू yes. विल बी गिविंग 4 प्रोसीजर्स टू 4 स्टूडेंट्स डिफरेंटली. उनकी Right. ट्रेनिंग होती रहेगी. लेकिन मैडम इसमें रिस्क होता Hmm. है. जब एक, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज Hmm. जनरल टेंडेंसी कि जो शरारती बच्चा होता है और आप उसको Hmm. क्लास मॉनिटर बना दें या किसी भी चीज का एक ऑफिसर बना दें, तो वो थोड़ी अकड़ में आ जाता है कि अब तो तेरे को मेरी बात सुननी पड़ेगी. वो थोड़ा सा दादागिरी भी आ सकती है उसमें. सो दिस इज व्हाई But आपने a एक चीज पहले बोली थी कि एज ए टीचर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. yes, वी yes, हैव right. टू हैव द हॉक्स आई. Hmm. बाज की आंखों से हमें पर सर उनको एक देखते रहना वो तो पड़ेगा. कहते हैं कि बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से उसकी एटीट्यूड में चेंज भी आ सकता है कि मुझे भी आ मैम ने सकता है. दी है ड्यूटीज, आई शुड चेंज नाउ माई सेल्फ. दिस इज कुछ हो व्हाई आई सकता एम है सेइंग, सब. यही मैं कह रहा हूँ कि आई हम्म. एम नॉट टोटली डिसएग्रीइंग विद यू, बट दिस माइट आल्सो हम्म. हैपन. द अदर साइड ऑफ द यस, कॉइन राइट. माइट आल्सो हैपन. हाँ. यस. सो वी हैव टू बी केयरफुल. लेकिन ये ड्यूटीज उनको यस. सिखाई ऐसे ही जा सकती हैं. आप हाँ जी. सोचिए ना, बच्चा यहाँ पे टैग लेके पहले दिन जाएगा अपना कि मम्मी आज मैं अपने हम्म. क्लास का इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटर हूँ, इलेक्ट्रिसिटी हम्म. ऑफिसर हूँ बल्कि. तो जब वो हम्म. हेलो ऑफिसर सर। उनके कानों में पड़ेगा, दे विल बी वेरी हैप्पी. हम्म. अरे ये हम्म. तो स्कूल वालों हेलो ने, अब सर। तो ऑफिसर बनेगा ही बनेगा मेरा बच्चा. हम्म. हेलो सर। जी सर. हाँ सर, अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जी. जैसे कोई नोटी बच्चा है तो उसको वी शुड मेक हिम मॉनिटर और समथिंग, जी. जी. एंड देन sir has discussed that there is a chances for him to be little bit more rude and all and bossy type. जी.
So I think we should give him responsibility, not the monitoring work. Yes. Hmm. So responsibility, like sir told, chalk in charge, chalk officer, electricity officer. So he has to do that work only. He has nothing to do with other students. Yes, I think. that is very much right. Yes, yes. उसके लिए तो सर हमें अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी हमेशा. वी हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट. मिसयूज ऑफ पावर Yes, भी yes. ना हो और प्रॉपर जी, यूटिलाइजेशन ऑफ पावर भी हो. जी, जी, कि इफ यू आर क्लीनलीनेस ऑफिसर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू सी कि कोई बच्चा गंदगी नहीं फैलाएगा. अगर होता है जी, एज ए प्रिंसिपल, मैं कॉरिडोर में जा रहा हूँ, मेरे को कोई टॉफी का टुकड़ा मिला, देखा छिलका पड़ा है, आई विल पिक इट अप माई सेल्फ एंड पुट इट इन द डस्टबिन. पूरी yes, स्कूल yes. की आंखें आपको देख रही होंगी एंड देन एट दैट टाइम इन देयर माइंड्स इट विल स्ट्राइक कि अगर हमारे प्रिंसिपल सर एक कूड़े का छिलका या कागज या ट्रैश उठा के डस्टबिन में डाल सकते हैं, देन आई कैन ऑल्सो डू. Yes, yes, Certainly this will instill a positive behavior in their attitude yes, or in their nature of working. yes, yes, sure, Similarly, for sure, sure. example, visitors in the classroom, और बच्चों कैसे हो, everybody shouts. Yes, या मैडम को भी मैंने देखा है कि जब मैडम आती है तो बच्चे एक लय में गाते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, yes, या क्लैपिंग करते हैं, तो दैट इज जस्ट ओनली क्लैपिंग. कुछ बच्चे डेस्क पीटना शुरू कर देते हैं, ये मारना शुरू कर देते हैं कुर्सी पे. So those type of things can be avoided. yes, So I will not go for any further details. अगर हमारे लिए, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से हमारा डिस्कशन बड़ी पॉजिटिव वे में चल रहा है, शेप ले रहा है, तो इस हिसाब से हमको एक yes. 5वां सेशन भी करना पड़ेगा. अब Mhm. आपको मैंने अभी ये सेशन के लिए 10 मिनट्स 7 मिनट्स समो रिकॉर्डिंग चालू हो रही है एंड देन सर्टेनली वी विल कम बैक टू दिस. अभी आप लोगों के Okay. दिमाग में कोई भी प्रोसीजर होंगे तो आप ग्रुप में लिखिएगा. I will certainly be happy to share with everybody कि what exactly are our minds, up to what level we can go to think about the benefit of our kids. Yes, लेकिन एक बात देख लीजिए डॉक्टर साहब, अंजलि जी, राधिका जी, हरबिंद जी, ऑल द मेंबर्स, गलतियां सबसे होती हैं और कभी कभी हमारा मूड इतना खराब होता है कि वी जनरली पेनलाइज whole class for the loud behavior. Loud behavior over means कि that is huckus created by one or two students only, but we penalize whole class. But that is not acceptable. So do not penalize the entire class for any off task behavior. I will say off task behavior. अभी इसके बाद आएगा विदिटनेस भी आएगा, टास्किंग भी आएगी. एंड देन जहां आपने देखा कि पूरी क्लास में 2 4 6 बच्चे भी हैं आपके लिए जो आपके एप्रिसिएशन को एक्सपेक्ट करते हैं, दे डिजर्व इट, देन यू शुड रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द मेजोरिटी एंड सेट अप द सेपरेट सिस्टम फॉर द persistent offenders. मैं अभी बाद में इसके बाद आऊंगा नेक्स्ट सेशन में. देयर विल बी नंबर ऑफ अदर थिंग्स, रूल्स, रूटीन्स, और उसके बाद लास्ट में आएंगे हम आज का सेशन जहां खत्म करेंगे, दैट विल बी कॉन्सिक्वेंसेस. मैंने आपको बताया था कि जनरली हम लोग बोलते हैं कि भाई एक बार इसमें देखा मैडम इसने मेरे को थप्पड़ मारा, दूसरा बोलेगा मैडम इसने पहले मेरे को गाली दी, वो बोलेगा मैडम इसने मेरे को जोर से घूर के देखा था, मैडम ये मेरा मजाक उड़ा रहा था. एंड यू विल ऑल्सो बी annoyed to such an extent कि आप दोनों को दो दो थप्पड़ मार के और चुप बैठा दो. गलती एक की होगी, दूसरे के पेरेंट्स आपको पेरेंट टीचर्स मीटिंग में घेर लेंगे, और ये होता है जनरली, आप माने या ना माने. इनोसेंट तो होगा एक, लेकिन उस समय नहीं पता चलता. सो इट इज बेटर नॉट टू पेनलाइज एवरीबॉडी, बट यू कैन फाइंड आउट. जैसे अभी आपने कहा था अंजलि मैम ने कि जो नॉटी बॉय है उन्हीं को हम ऑफिसर बना देंगे, तो सर्टेनली वी कैन डू दैट, बट नेवर एवर penalize whole class or a bunch of students for this particular rude behavior. चलिए, अभी ये तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लोग बैठे हैं,
तो बताइए अगर आपके पास कोई और प्रोसीजर्स हों ऐसे, लैबोरेटरीज, कॉरिडोर्स में मूव करना है, मूव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉरिडोर, अगेन डोंट ड्रैग योर फीट। मॉर्निंग असेंबली में हम लोग देखते हैं, हम लोग रुमाल रखवा के वो नाखून दिखाइए, हेयर कट देख लेते हैं, एंड देन समटाइम्स passing through also we will be just finding out. चलिए जो भी नहीं होगा होगा, we will be coming back to the same link again. अब आप लोग बताइए कि अगर आपके पास कोई इस तरीके की मिलती है तो ग्रुप में चैट कर दी, ग्रुप में लिख दीजिएगा। यहां लिखेंगे तो यहां भी मेरे पास चैट रिकॉर्डिंग के साथ आ जाती है। मॉर्निंग असेंबली अभी अंजलि जी ने बोला था, मैंने वही रिपीट कर दिया। मॉर्निंग असेंबली में देयर आर अ नंबर, जूते साफ करने के लिए देखिए, अगर आप बोले किसी टीचर से कि मैडम सबके शू शाइन देखिए, तो व्हाट द पीपल विल स्टार्ट, दे विल वाइप ऑफ देयर राइट फिट और शू विद द लेफ्ट हैंड ट्राउजर और लेफ्ट लेग ट्राउजर, बैक में उसको कर लेते हैं। देखिए ये एक टांग होती है तो ये वाला जूता इसके पीछे और ये वाला जूता इसके पीछे ऐसे रगड़ के साफ करते हैं, and that is also no a bad manners. May I come in, madam? This type of permission seeking is also rude. As I told you, a number of procedures have to be set. I will send you a number of, लेकिन आपका भी अगर feedback मिलेगा, then certainly a variety of this will be coming to my mind. I have got a rule book, I will add to this, and then certainly we can move forward with another module. Now the next thing we will be coming down is routines, rules and routines. You see, classroom routine is a well-rehearsed response to a teacher's directives, what a teacher says. When a procedure is repeatedly observed by all members of the class, it becomes their habit and then it becomes routine. Obviously, जब routine बन जाएगा तो वो हमारा rule हो जाएगा. I have seen in many of the houses, including mine also, मैं जो जूते बाहर लेके जाता हूँ, पहन के जाता हूँ घर से, वो हमारे दरवाजे पे ही शू रैक में रख दिए जाते हैं और अंदर आने के स्लीपर्स अलग होते हैं। टॉयलेट जाने वाले जो स्लीपर्स है उसको पहन के हम पूरा घर में नहीं घूमते हैं। And these are the things which all automatically they become routine. और जब routine हो जाता है, then certainly we don't waste too much of time on the for nagging these teachers or students for not doing the things, for not doing the things. वो भी अच्छी बात नहीं है। हाँ ये बात ठीक है, अंजलि जी ने लिखा है चैट बॉक्स में, लिखा है कि बैंड जरा उनको सिखा दीजिए, वो नोटी होते हैं ना, वो शुरू शुरू में तो 2-4 ड्रम भी फाड़ देंगे मैडम आपके, फिर फिर आप उनसे परेशान हो जाओगे कि मैंने ये क्या करवा दिया। सो दे आर नॉट टू बी अनाउंस्ड, these rules and routines are they are not to be announced, but they are to be practiced. Practice, and every time you keep on practice, that gives them the sense of responsibility. Yes, I can do this task more efficiently by doing repeatedly the same thing. मॉर्निंग असेंबली के टाइम में वो हाथ तो जोड़ लेते हैं, आंखें ऐसे करके बंद कर लेंगे और मंदी मंदी आंखों से ना मंद मंद ऐसे करके ना फिर इधर ऐसे देखेंगे, फिर इधर ऐसे देखेंगे, फिर पीटीआई किधर है, कौन कहाँ पे है, एंड दे कीप ऑन वॉचिंग. दे विल नॉट बी डिवोटिंग देयर पर्टिकुलरली 2.5 से 3 मिनट प्रेयर होती है टू द दैट प्रेयर इटसेल्फ, बट वी हैव टू टीच देम एंड देन प्रैक्टिस इट नॉर्मली. So to keep your days running smoothly, establish consistency by all teachers. जितने भी teachers हैं, they must follow and they must see what are the daily tasks and activities. So over here, I will stop now for recording and please come back on the same link. This is the same link which we used on 11th of April. Today is 15th. This will be recorded and then we move on to the next one. उसके बाद हम routines
का consequences तक चलेंगे, and after that we will finish today. Then behavior management in kids, एक पूरे 2 सेशंस लग सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए. That we will do. That is not a big problem. But the thing is that कि mastery over classroom management should be near perfect. If not perfect, then near perfect. Right, then we are coming back immediately. This will be stopping anytime. Now the secret to warding off at least some behavior, it is 39-38 seconds, is establishing positive classroom procedures. लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव उनके अंदर इंस्टिल कर पाए. कभी कभी उनके नेगेटिव प्रोसीजर्स जो हैं, दे आर आल्सो टू बी रिमूव्ड. वो नेगेटिव प्रोसीजर्स कैसे आते हैं वो भी मैं इसी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूंगा जब हम करेंगे रूल्स एंड प्रोसीजर्स in this particular presentation, that is rules and routines. So remember to take time to teach procedures during the first week of the session, first week of the opening of the school. Let us start where it is from day 1, the first week. अभी हमारा आप लोगों को मार्च का इशू मिला नहीं होगा. आप लोग सभी मेरे को मेरी पर्सनल विंडो पे अपना अपना ईमेल आईडी भेज दीजिएगा. जिसने नहीं भेजा होगा वो, जिसने भेज दिया है मेरे पास, certainly I will send you back. पहले वाला मैं रूटीन भेजूंगा, पहले वाला आपको वीडियो भेजूंगा. फर्स्ट सेशन जो हमारा 11 तारीख को हुआ था, प्लस आपका टीचर्स नेट सर्टिफिकेशन इसके बाद मिल जाएगा आपको. पावर पॉइंट टोटल एक ही पावर पॉइंट है,